सही है. So the question was that x square minus 2x plus 1 equal to 0. Use the quadratic formula to find the roots. एक बंदे ने सिर्फ इसका जवाब दे दिया था. So you people all try. So try करो कि इसका आंसर क्या आता है. Yes, the answer is 1. You are correct. स्क्रीन तो सब कुछ हो रही है ना. Yes. इसके फाइंड करो. इसको तो डायरेक्टली भी कर लोगे, बट आई विल रिकमेंड कि तुम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लो ताकि आदत बन जाए प्रैक्टिस करने की. जल्दी करो, बहुत टाइम लगा रहे हो. आई डोंट थिंक सो कि 1.5 इज द आंसर. 1.5 पुट करके इसमें से कोई भी जीरो नहीं हो रहा. You wanted to say 3 or 2. I think you added these. टू वन. Yes, 2 and 1 are the answers. यार देखो, 1 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 is equal to 0. 2 पुट करो, 0 is equal to 0. या फिर इस फॉर्मूले से भी 1 और 2 आएगा. Yes, 1 and 2 and the answers. I don't know why people got 3 by 2 or something like that. इसमें से तुम लोगों ने ये करा था कि इसको या तो फैक्टराइज करके 0 के बराबर पुट करो, you get both equal to 0. सही है ना? Because this is a property, if a dot b equal to 0, तो या तो a 0 हो गया, फिर b 0 हो गया, फिर दोनों 0 हो गए. सही है? Or you can use this formula. ये सबको समझ में आ गया? डू यू वांट मी टू रिपीट इट? सर इसको फॉर्मूला में सॉल्व करके बता दें. ओके, सही है. यहाँ पे तो गलती नहीं की थी किसी ने, माइनस बी में ये माइनस बाहर करके. यहाँ तक सबने सही किया था. ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3 एंड सी की यस वैल्यू सर. 2 है. -3 का होल स्क्वायर 9 आएगा. इफ यू हैव रिटन -9 दैट वुड बी इनकरेक्ट. 3 प्लस माइनस 9 minus 8 is 1. 1 का स्क्वायर रूट इज 1 डिवाइड बाई 2.
So either it is 3 plus 1 divided by 2. ये प्लस माइनस में शायद आप लोगों ने गलती की थी, बाकी आपकी कैलकुलेशंस वगैरह सही थी. 3 plus 1 divided by 2 और 3 minus 1 divided by 2. 3 plus 1 divided by 2 is 4 divided by 2, which is 2. एक 2 आ गया आपके पास, and 3 minus 1 is 2. 2 divided by 2 is 1. So 2 comma 1 are the answers, which can be seen from here as well. 2 comma 1 are the answers. ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Thank you. Okay. In case you people have problem with this formula, which is quite possible, कोई मसला नहीं इसमें, you can either go for factorization या फिर factorization से, since there is always the option of back solving. For example, if I ask you people that what would be the root of, for example, x cube minus 3x square plus 6x plus d. For example, plus if I write, if I write 6x plus 7 equal to 0. प्लस 7 इक्वल टू 0. नाउ ऑब्वियसली अगर आप इसको देखें ना, इसके 3 रूट्स हो गए. ऑप्शन में आपको एक, मतलब ऑप्शंस में आपको एक गिवन होगा, सही है, क्योंकि 3 रूट कोई नहीं लगता ऑप्शंस में. सो नाउ द थिंग इज के यू डोंट नो फार्मूला फॉर दिस. देयर इज अ क्यूबिक फार्मूला. एक आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता है. देयर इज अ फार्मूला फॉर क्यूबिक, लेकिन इट इज एटलीस्ट लाइक अ हाफ अ पेज फार्मूला, सो वो कभी नहीं है ना, आप लोगों को टेंशन ना लो. आप लोगों को ऑप्शंस दिखेंगे 4, सही है, ए बी सी. अगर कोई ऑप्शन इसका रूट होगा, इट मींस कि वो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो करेगा. जीरो इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए. व्हाट डू यू डू? सारे ऑप्शंस को इसमें पुट कर ले, जो भी जीरो इज इक्वल टू जीरो दे दे, वही आपका आंसर हो गया. Note this point right now. I'm pretty sure you all will forget it by the end of the session. Note this point that if you have a expression equal to zero and you are given 4 options, you don't need to find them. It's not necessary unless you know directly how to find them. Agar find nahi kar sakte, no problem. Use all the 4 options, put it in the given expression, and this must be equal to 0. Jo 0 is equal to 0 de dega, that would be the answer. For example, if I tell you this, इसका कोई दे दो आंसर की क्या आएगा? दिस वुड बी इक्वल टू 0 बाय द वे, सही है. अगर ना भी गिवन हो और सिर्फ बोलो कि रूट्स, इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर इसमें पुट करो कि वो इसको, हाँ, दैट्स अ वेरी गुड आंसर. बट एज आई ऑलवेज टेल यू पीपल टू ऑलवेज चेक फॉर दिस ऑप्शन. इफ यू आर गिवन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर बोथ ए एंड बी. Again, yes, both A and B, exactly. That is the correct answer. Michelle, you must check for the option B as well. If there are 2 options given to you in there, so you must check for both. क्या ये सबको समझ में आ गया? Do you want me to explain this one as well? Should I proceed? Yes, Yes. sir. Okay. So we did this quadratic formula. Now people need to know about discriminant. Can anyone tell me what does discriminant means when we say discriminate something? Or No, sir. it means फर्क करना. You just need to differentiate it. It's just like, you differentiate between 2 things. How do you, मतलब किस तरह explain करना है कि ये चीज उस दूसरी चीज से different किस तरह है. अच्छा, make sure you note this point. Discriminant is only b square minus 4ac. ये ना हो कि you people go for this कि b square minus 4ac का square root. This is not the discriminant. Discriminant is this thing. Now, how does it discriminate? Let me explain this. When I gave you people the question that x plus 1 whole square is equal to 0, इसका आंसर क्या था? -1. Yes. When you use the formula, you'll get this, right? Now, how is this the discriminant? One of you asked me the question over here that -2 plus -0 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Yes, because adding or subtraction doesn't matter in 0. It is the additive identity. Okay, now listen to this point very carefully. How is this discriminating? Telling me what are the nature of the roots.
अब यहाँ पे आप लोग देख ले कि 4 minus 4 into 1 into 1 ये तो 0 हो गया ना. So if the discriminant is 0, make sure you are writing these points. सही है? I can speak slow and wait for you if you need to write, but make sure you are writing this. If the discriminant is 0, आप लोग check करें, बच जाता है आपके पास -2 plus -0 which has no value, 2 into 1. So you get -2 divided by 2, सही है? Which is -1. अच्छा, तो इसके जो दो रूट्स हो गए वो इक्वल भी है, रेशनल भी है और रियल भी है. ये इक्वल तो है ही क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल है. मैंने बताया था ना इसका मल्टीप्लिसिटी के टॉपिक में कि ये मतलब अगर स्क्वायर डिग्री है तो आंसर तो 2 आने चाहिए और दोनों आंसर -1 आ रहे हैं, विच आई बिलीव आसम हैड आस्क्ड द क्वेश्चन. ये रियल भी है एंड दीज आर रैशनल. ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया ना. इफ योर डिस्क्रिमिनेंट इज 0, मैं स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहा वैसे, रिमेंबर दिस, स्क्वायर रूट नहीं, ओनली दिस वैल्यू, दिस डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0. When the discriminant is 0, what do you get? Equal, real and rational. Is this point clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now, if you have the discriminant is changed, for example, -2 plus minus, I have given you something like 3 divided by 2. Say, for example, if the discriminant is, okay, let me change this. I make it 1. सही है? Now, the discriminant is 0 or not 0? ये बता दो. Not 0. Yes, not 0. So now check the difference. अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, -2 प्लस -1 तो आ गया, सही है, डिवाइड बाई 2. इससे मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, -2 + 1 विच इज -1 डिवाइड बाई 2, कॉमा -2 -1 विच इज -3 डिवाइड बाई 2. व्हाट इज द डिफरेंस? दीज आर रियल, these are rational, but they are not equal. Difference समझ में आ गया? If the discriminant is not 0 and is a perfect square, 1 is a perfect square, 1 is a perfect square, सही ना? 1 is a perfect square. So if the discriminant is a perfect square and it is non-zero, the roots will be real, rational and unequal. यहाँ पे सिर्फ unequal हो जाएगा, and unequal. सही है? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay. So moving on, when you have a non-perfect square, for example, if I tell you that -2 plus minus square root of 3. Now, first of all, tell me, is this a zero discriminant or non-zero discriminant? Non-zero discriminant, Yes, it is a non-zero discriminant, but what's the but difference? not a perfect square. Exactly. Under root 3 is not a perfect square. If it was under root of 9, then I would say it is a perfect square. It is not perfect square. So the answer would be -2 plus square root 3 divided by 2, or -2 minus square root of 3 divided by 2. Now, what's the difference? These are unequal. Sorry. First, they are real. Real to सारे होंगे. Obviously, real to सारे होंगे. They are unequal. And what's the additional difference over here? Are they rational or irrational? Irrational. Exactly, irrational. अच्छा, irrational का मैंने square root वाला short form बताया था. If you have anything inside a square root which is not a perfect square, वो हमेशा irrational होगा. Remember, under root of 1, 1 is a perfect square, वो rational है. But under root of 2, 2 is not a perfect square, that would be irrational. सही है? So when you get a discriminant greater than 0 but is not a perfect square, so ये वाला लगेगा. रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल. अनइक्वल तो इसलिए होंगे क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो प्लस माइनस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता. यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस. तो वही सेम रूट आ जाता है, वो मल्टीप्लिसिटी में आ जाता है. सही है? बट इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ये वाला सीन लगेगा, एंड इफ इट वाज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला सीन लगेगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. So there is this one last thing. What if your discriminant b square minus 4ac is less than 0? For example, if I tell you b minus 2 plus minus square root of 4 minus 9, something like this, for example, say na 2 and 2, what's the difference over here? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अनइक्वल. अनइक्वल तो हो गई है, बट समटाइम्स, अच्छा इसका मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द रैशनैलिटी ऑफ दिस. इज दिस रियल और इमेजिनरी? द रूट्स आर रियल और इमेजिनरी?
Here you are seeing a negative number inside a square root. Is this real or imaginary? Imaginary. Exactly, this is imaginary. When there is a negative number inside the square root, it is imaginary number. So what do you see over here? The roots are they are not real. You cannot say them. The roots in the first place, they are unequal, and secondly, they are imaginary. By the way, what would you say? Would we say rational, irrational, or real? What? Irrational. You can say irrational, but what would be the most मतलब जो सही term होगा, that would be a complex, because ये complex number है. Yes, The yes. complex numbers, because you are involving iota. Now if you say real number, real actually are a subset of the complex number, so you can say real, सही है ना? But since they are imaginary, so most commonly used term is imaginary or complex roots, सही है ना? You get a complex or imaginary roots. ये point सबको clear है? Yes, sir. So if I give you, for example, वो question आप लोग जो FLP में share कर रहे थे, okay, let me just tell you the difference between this. If I tell you m plus 1 x square plus 2m into x plus m plus 1, सही है ना? यहाँ पे मुझे a b c की वैल्यूज बता दे कोई. a क्या है, b क्या है, and c क्या है? AM+1 है, B2m है और CM+1 है. Exactly. So many people go for m only. c की वैल्यू is this whole constant. देखो, a वो होता है जो x स्क्वायर के साथ होता है, x स्क्वायर साथ नो मैटर जो भी हो वो आपका a हो गया. b वो होता है जो x के टर्म के साथ हो, रेस्ट जो भी होना वो सारा आपका कांस्टेंट c का टर्म हो गया, सही है ना? सो इफ आई टेल यू टू फाइंड द रूट्स ऑफ इट इफ दे आर इक्वल, सो व्हाट वुड यू डू? डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर लोगे, सही है? सो यू गेट माइनस 2m प्लस माइनस 2m होल स्क्वायर माइनस 4ac विच इज माइनस 4 इंटू पूरा ये m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इंटू ये वाला m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स m प्लस 1. अब ये तो मैंने पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लिया. इफ आई वांटेड टू चेक द रूट्स, यू ओनली नीड दिस टर्म, सही है ना? सो यू ओनली नीड टू चेक द डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट विल टेल यू कि what are the nature of the roots. If you get an MCQ that what tells you the nature of the roots, you will go for the option of discriminant, by the way, सही है ना? So you will take this 2m whole square minus 4 into m plus 1 into m plus 1, सही है ना? You will put this equal to 0, you will solve it and you will get your answer, सही ना? कि for what value will this quadratic equation give you such kind of roots, whichever is asked in the question. Is this clear to everyone? Yes, sir. I will give you questions based on this. So you can use the FLP wala question and the others. I'll provide you much more for that. Okay. इसमें अगर कोई confusion नहीं है, so we can begin with functions right now. Is there any point that you people need to note so I can write them again for you, or you have noted all of it? Should we proceed? Yes, sir. Yes. Okay. Have you ever heard about domain and range? Or had you ever a question about this in your NET, domain and range of a function? Yes. Okay, so what does the domain means? Okay, if you had checked the functions video which I have had given to you, actually I explained function as a machine. Now, for example, you have a juicer. Obviously, this is not a juicer, just pretended to be a juicer. So, for example, if you put in mango, you will get a mango juice. So we can say that mango is a domain for this machine because it is a valid thing to put in it and it will give you a valid output which you can drink, which you can use. But can I put stones inside it? कभी किसी ने देखा कि पत्थर डाले उसमें आपको juice or something, you don't get it. So it is not a valid domain. So domain is something that is valid for your given function or for your given machine or for your given operator. Which you can put inside it. And range is what you get out of it. Range is what you get out of it. The mango juice would be the range of it, and the mango item would be the domain of it. So now you cannot put stones or something like that. If you put stones, you will get nothing. So neither you have a range nor you have a domain. So is this point clear to everyone? Now I'll explain it with a function. Somebody tell Yes, me, sir. what is that value which can make this thing problematic? Tell me some value which if I put in this in f of x is equal to 1 by x and I will get a very weird thing which I don't want. What could be that value?
0? Exactly 0. Yes. Because if I put 0, it is undefined. Do I know what undefined is? No, I don't. So if I don't know it, why would I need it? Neither is undefined a range, nor is x is equal to 0 a domain for it. Okay, now taking this further, what would be the domain for this x minus 1? What is the number that I cannot put, and what are the numbers that I can put in it? We can put 1. Yes, exactly. We cannot put 1 inside it. If you put 1, so niche 0 ho jayega. So what do you get from it? If you have anything in the type of like this, 1 divided by something, 1 divided by something. If you have 1 divided by something, that something must be greater than 0, not equal to 0. You know, कि तुम लोग मतलब some people say कि like this is not the correct answer. This would be the correct answer. That something must be greater than 0, not greater than or equal to 0. सही है ना? So how do I find the domain? Over here, let's check for first one, 1 by x. So I am saying that niche something must be greater than 0. So what is the domain? The domain is all positive real numbers. Can you see it from here? Either you will have the options as in English or over here like this in terms of this. So the domain would be x greater than 0 because I can put x greater than 0. Can I put negative numbers inside this? Can I put negative values for x? No. Why can't we? I cannot have minus 1 by 2 or 1 by minus 2. Isn't X this, should be greater than 0. sorry? I'm just asking, if I said that x is greater than 0, so can't I say that x should always be, I can say that x can be less than 0. Is it possible? Is minus 1 by 2 a real value, something that is not making problems for me? Can I say that if I put like, for example, if I put my minus 2, so I get minus 1 by 2? I think this is correct. Why? Because minus 1 by 2 is a real value. As long as you are getting a real value and not an imaginary or an undefined number, the domain is fixed. So the domain for this is x greater than 0 and x less than 0. Both are the domain of it. How do we write it combined? How do we write both of these combined? We say that any real number except 0. इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये दोनों एक तो 0 से ग्रेटर है, एक 0 से छोटा है, लेकिन इक्वल कोई भी नहीं है 0 के. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस के या तो 0 से ग्रेटर या 0 से छोटा, बट 0 नहीं. डिड यू गेट दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, clear. So if we have 1 over something, you make sure that that something is greater than 0. So now I'm going to give you a question. What would be 1 divided by x minus 2? What would be the domain for this? Give me the full answer. X cannot be 2. Exactly, x cannot be 2. बाकी ये सारी वैल्यूज हो सकती है या नहीं? Yes, बाकी सारे हो सकते. एग्जैक्टली. अच्छा, अब अगर किसी ने इसको इस तरीके से किया, सो वी वुड बी थिंकिंग कि चलो x ग्रेटर देन 2 तो आ गया, राइट? बट इसमें नेगेटिव नंबर्स भी तो आ सकते हैं ना. सो हाउ डू वी कॉप अप विद दैट? सो व्हाट डू यू डू? व्हाट इज द शॉर्टकट वे, और यू कैन से व्हाट इज द मेथड दैट वुड बी करेक्ट? सो यू जस्ट डू दिस कि तुम लोगों ने ये चीज 0 के बराबर पुट करनी है. यू पुट x minus 2 या फिर वो जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो 0 के बराबर पुट कर लो. जो नंबर आ गया ना,
जो नंबर आ गया उसको छोड़ के सब इसका डोमेन में आते हैं, सही है ना। जो नंबर नीचे आ जाते हैं ना उसको साइड पे करके सब इसके डोमेन में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, if that is clear, then solve this. X square minus 4. Use this thing which I mentioned over here. कौन सी ऐसी वैल्यू जिसको मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक या फिर मतलब मसला बना देगी? 2 square. Sorry? 2 square. And there would be another value, because I always mentioned if there is a square or fourth power, there would be two answers for x. 2. And what is that other number Minus whose? Yes, 2 comma minus 2. X square minus 4 is equal to 0. So x square is equal to 4 and x is equal to plus minus 2. Yes, Ali, you're right. X is equal to plus minus 2 is the correct answer. So, Acha, is x plus minus 2 the domain of it? No, all other numbers except this. Exactly, yes. Because some people do come for the option where this is written. Any real number other than plus minus 2, ye likha hoga. So go tick for that. Or there would be written in form of like x belongs to any real number except something like this. Just 1 minute. X belongs to any real number except set में ये लिखा होगा plus minus 2 or 2 comma minus 2 or minus 2 comma 2. So this would be your answer. सही है ना? yes, sir. Okay, so this is done. Okay, now people might be asking that what would be the range of it. So remember that finding the range of something like this is very troublesome. You people don't need to get into the depth of it. Say, if you can find the domain, then it's okay. But it's not necessary that you find the range as well. For range, I can just tell you a shortcut which I will tell you at the end of it. For this, I'll tell you right now. आप लोगों ने ये कर लेना है ना कि चलो डोमेन तो पुट नहीं कर सकते, तो डोमेन अगर पुट नहीं कर सकते तो डोमेन से जो वैल्यू आती है वो भी नहीं होगी रेंज। मतलब अगर मैं इसमें 0 पुट नहीं कर सकता तो 0 पे ये मुझे अनडिफाइन देते हैं, तो इसके रेंज में अनडिफाइन आ भी नहीं सकता। ये बात तो क्लियर हो गई ना? जो मैं इसमें पुट नहीं कर सकता तो उसका आउटपुट भी तो नहीं आ सकता ना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो इफ आई कैन नॉट पुट इन इट, आई कैन नॉट हैव दैट आउटकम एज वेल। सो अगर टेस्ट में आपको आ जाए कि चलो इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो तो जो डोमेन की वैल्यूज पे आता है वो तो आंसर होगा ही नहीं, तो इस तरह करके इसमें और वैल्यूज पुट करो। फॉर एग्जांपल इफ आई पुट -1 इससे आ सकते हैं, -2 आ सकते हैं एंड सो ऑन। तो इससे बाकी रियल नंबर्स आ सकते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस। That depends on your options कि वो आपके पास options के, but you will not get a question of range, so don't worry। सही है ना? range क्वेश्चन थोड़े से difficult होते हैं even for the engineering students, so people don't need to get into the detail of it। सिर्फ ये domain वाले याद कर लो। okay, if you know this then tell me this, what would be the domain of this square root of x? डोमेन में ये देखो ना कि थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जाओ, किसमें मैं कौन सा नंबर पुट नहीं कर सकता, कौन सा नंबर इसमें मैं पुट नहीं कर सकता? One. Sorry, 1. if I put 1 square root is 1, it is a proper, a good, very beautiful number. It is no problem in my life. Is there any number that would make it problematic which I cannot calculate? Under root 0. 0. 0 is also a very beautiful number. Under root of 0 is 0. Anyone has a problem with 0? I'll just give you a hint. The range should be a real number. You cannot have a complex number in range. -1. Exactly. You cannot put a negative number inside it. So for square root, you should have the domain greater than or equal to 0. 0 इसमें put कर सकते हैं. I have no problem with 0 being in the square root. In fact, it is good 0 square root में होकर मसला खत्म कर देते हैं, सब टर्म 0 हो जाती है, so calculations आसान हो जाती है. So it is greater than or equal to 0. So if I tell you that x plus 2, find the domain of it. So it has any real number which is greater than or equal to 0, no negative number. सही है? ये याद रखिए कि square root function cannot have negative values. एंड इसके रेंज में भी कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती। कभी आपने ये देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर? ये कभी नहीं हो सकता।
स्क्वायर रूट में जो पुट करेगा वही वैल्यू का सिर्फ स्क्वायर रूट ले लेगा, वो नेगेटिव नहीं कर सकता उसको. सो द रेंज द डोमेन इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड द रेंज इज एनी पॉजिटिव नंबर. 0 भी हो सकता है और या पॉजिटिव नंबर. सही है. सो वी यूजुअली राइट इट एज 0 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर दे सकता है. 0 इंक्लूडेड है, 0 के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया है. सही है ना. डू यू पीपल नो दिस इंटरवल नोटेशंस और नॉट? No, sir. Okay, no problem. This will be explained in the later video, not a big deal. I will give you the questions based on this, so no big deal. ये तो सबको समझ में आ गया ना? Okay, just find it for this. उस्मान थोड़ा स्लो करो प्लीज. X would be greater than or equal to -2. एग्जैक्टली, बिकॉज साफ पता चल रहा है कि -2 पुट करके 0 आता है, तो -2 से बड़ा नंबर बस पुट करो. -2 भी पुट कर सकते हो क्योंकि 0 स्क्वायर रूट इज 0, बट यू कैन नॉट पुट लेसर देन -2, sorry, greater than -2, because if I put -3 plus 2, for example, मैंने -3 पुट किया, do I know the square root of -1? I know it is iota, but it is not a real number. Is that clear to everyone? Okay. Can somebody tell me what would be the range of this? Can somebody tell me what would be the range of this? Will it be the same, any positive number including 0 or something different? Actually, it would be the same because -2 put करके 0 आ रहा है, so you can get 0 and you can get a greater number than 0. क्योंकि अगर जितने आगे नंबर पुट करोगे ना वो आपको ग्रेटर वैल्यू देगा. So 0 भी आ सकता है, 0 से ग्रेटर भी आ सकता है. It is the same as this. सही है ना. So you can get either 0 or much more than 0. Is this clear to everyone? Yes. Okay. Last question, because the time is running out. I have to restart the meeting. So what if I give you this? Just tell me what is the domain of this? Is it x greater than 0 or x greater than or equal to 0? Just tell me this. Make sure you do know what this is. Just tell me, is the domain greater than 0 or greater than or equal to 0? By the way, are you people writing alongside? Are you people making notes or not? I am. Okay, perfect. Boys, बड़ी देर लगा रहे हो. Come on, make it quick. Is it greater than 0 or greater than or equal to 0? Think of a number that can be a problematic number for this. इस पूरे एक्सप्रेशन को कौन सा नंबर है जो मतलब इसका बेड़ा गर्क कर सकता है? Is there any number? 0. Exactly. So can we put 0 or X would be greater than 0. yes, not equal to 0? अच्छा, Yes. लोग ये कर लेते कि they go for this domain. चलो, ये कह रहे थे कि x greater than or equal to 0. But what if I tell you that I can put 0? क्योंकि square root of 0 is 0, but ये तो फिर मेरे पास ये बन गया, which is in the form of 1 by x. I cannot put 0 inside this. मैंने एक फंक्शन को तो क्या कहते हैं आसानी दे दी, लेकिन दूसरे का बेड़ा गर्क कर दिया. You cannot do this.
you make sure you go for both. वो चीज जो दोनों को satisfy करे. It is actually question initially ये था 1 by x, इसमें 1 by x को नीचे square root ले लिया गया था. So you are given this. लेकिन आपका original function ये वाला था. So you make sure कि you satisfy both. You put in the values. Option आपको given हो गए. डोमेन में ये करें कि ऑप्शन पुट करके भी आप लोग कर सकते हैं. जो नीचे 4 ऑप्शन गिवन होंगे उसमें रेंज मतलब लंबे लंबे इंटरवल में गिवन होंगे. ऐसा नंबर उनमें से ढूंढो जो इसको मसला दे रहा हो. सो दैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर डोमेन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके. आप लोगों को इतने इन डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, बट आई एम जस्ट गोना टेल यू. इफ यू आर टोल्ड फॉर एग्जांपल x plus 2 equal to 0, sorry 1 divided by square root of x plus 2, so आपका आंसर होगा x greater than 2, sorry greater than minus 2, not x greater than or equal to minus 2. वही बात, स्क्वायर रूट को तो आप लोग सेटिस्फाई कर लेंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग इस चीज को भी सेटिस्फाई कर ले एज अ होल. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके. इसमें से रेंज, Yes. इसमें रेंज का कभी नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज फाइंडिंग इट्स रेंज इज अ बिग लॉट ऑफ जॉब. कोई जरूरत नहीं है उसकी. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि यू नो द डोमेन्स वेरी वेल. इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर हो तो लेट मी नो सो आई कैन रीस्टार्ट द मीटिंग. Yes, sir. Are you people free for another class? Because I'll have to finish this unless you want me to record it for you separately. Yes, sir, we are free. Okay, perfect. I'm stopping this and I'm going to start another one.